रही है। A 32-year-old person who happens to be a lady, a 32-year-old person who happens to be a lady in the United States of America, who happens to be of Pakistani origin, has been appointed the regulator of a major tech regulator. और फिर मैं यहां देखती हूं कि वो लोग, जब मैंने सियासत एंटर की थी, जो सेक्रेटरी थे उस वक्त, वही वहां बैठे हुए, उन्हीं की स्पीच आज 17 साल बाद शौकत तरीन साहब भी पढ़ रहे हैं। उन्हीं की दी हुई स्पीच शायद इसहाक डार ने भी पढ़ी थी, हमारे सारे मिनिस्टर्स ने भी, हफीज साहब ने भी। बट वी थिंक इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू गिव द सेम पीपल हु हैव नॉट really made policies which have helped this country, to give them first extensions and then to reappoint them. So जब वो 70-80 साल में माशाल्लाह पाकिस्तान को इतना अच्छा बना दिया, तो उन्हीं लोगों को दोबारा ये हमारी जो बदकिस्मती है, ये हमारी जो सोच है about not being able to do something better, about not being able to get out of this web, इसकी अक्कासी करता है। और I think आपको मैं एक और interesting, I'm going to quote from a book. Unless government takes in hand some scheme for the better organization of the rural credit, even with some risk of failure at the outset, the agrarian problem in this country will never be properly faced. We all agree that the agrarian problem of this country has to do with rural credit, right? Now, do we think that Shaukat Tareen said this? Do we think that Ishaq Dar said this? Do we think that the person before? You know, when this was said in 1901, 1901 mein, rural credit was considered to be a major impediment for rural growth. It still continues to be, and we feel we can congratulate ourselves over it, because हमारी 1% ग्रोथ बढ़ गई है। आपको एक और हम सबके लिए, I think, लम्हा फिक्रिया नहीं होना चाहिए. We should congratulate those who require congratulation or deserve congratulation, but we should certainly look inwards, because we believe this country has immense resources, and we believe that we are doing great things, the government tells us, right? अब मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान के साथ एक मुल्क होता था, पाकिस्तान का एक हिस्सा होता था, उसको वो अलहदा हो गया. We still don't know what were the reasons, how it happened. We must not let the children of this country know that, because we as a country are bent upon repeating the same mistakes. We are not going to ever learn our lessons from history. This is, हम विरसे में ये देना चाहते हैं, ये देते हैं. आप अब हमने पैदा होते नहीं, but probably for the last 10 years we've been hearing about the social sector growth in Bangladesh, how they were able to control population, how they were able to get better rates in child mortality, forget everything else, the mortality rates. Their population lives up to be 70, I think ours 66 or something like this, right? एक्सपोर्ट्स की बात हुई और मुझे हैरानगी हुई, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, 10 नहीं, 30 लोगों ने ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बार बार, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार. और यहाँ पे सिटिंग ओवर हियर, having left the exports, the Pakistan People's Party left government in 2013, your exports by 2010-11 had touched $25 billion. Do you know how many years back it was? 7 years back. And you have the audacity to tell us from the other side कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हम $25 billion. और मैं आपको अब एक बात बताती हूँ, आइंस्टाइन ने उसको आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थियरीज बोला था, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. अगर आप 2-2%, 3-3%, 5-5% भी ग्रो करते रहें, एक मुल्क चुप करके ग्रो करता रहे, बट उसके लिए उसको चुप करना पड़ेगा, इंटरनली कॉन्सेंट्रेट करने पड़ेंगे. चोर चोर के नारों से मुल्क में डेवलपमेंट नहीं होती. तो आप बांग्लादेश की स्टोरी सुन लें. 1971 हम सबको पता है क्या हुआ. 1971 में मैं आपको 10 साल आगे बताऊंगी. 1971 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी 0.8, सो व्हाट वाज वेस्ट पाकिस्तान, $0.8 billion. बांग्लादेश का सम पीपल से 0, बट अबाउट 0.36. स्किप ओवर टू 1980, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं $2.9 billion, बांग्लादेश की हैं $1 billion. सो वी आर डबल बल्कि ट्रिपल, राइट? फिर आप 1990 में आ जाएं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं $5.9 billion और बांग्लादेश की हैं $1.87 billion. फिर आप 2000 में आ जाएं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं $9.9 billion, बांग्लादेश की हैं $6.59 billion. So it's catching up, but still we are at least 30% ahead. 2010 जिसमें लूट हो रही थी, गलत लोग थे, लोग अपनी जेबें भर रहे थे, उस 2010 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट थी 18.4 और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तब भी कोई $24 billion थी. 18.4 और $24 billion. अब 2020 में देख लें मिस्टर चेयरमैन, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है $39 billion 2019-20 में, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है कोई 23 से 24, या you know if you want to really push it, $24 billion, right? Mr. Chairman, if this does not open our eyes to the mess
that we continue to sell as the great fate of this country, I don't know what will. And this should be a reality check for all of us, because we do not want to keep this country in this constant spiral of IMF loans. Every new government coming in, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, IMF के पास जाए, IMF के पास जाए. कौम को अब we will have to tighten our belts. We will have to go through the stabilization process, because we need macroeconomic stability. Okay, 2 years of macroeconomic stability. Now we have enough resources to do a bit of growth. But because that growth is not based on structural changes, on structural corrections in the economy, eventually you will go back into that spiral. And Mr. Chairman, is it not unfair for a country not to learn any lessons after maybe 20 cycles such as this? Or are we now attuned to this being our fate? Mr. Chairman, I want to talk about some of the other issues which have ensued in this country and which actually make you question the logic or the whole purpose of how can you have people in power who do not understand even or do not take any responsibility for the weight that they carry as representatives of the state. When you come in the office of the Prime Minister, you cease to be Imran Khan or XYZ, and you become the Prime Minister of Pakistan. Everything you say cannot be I, myself and Irene. But you are so self-obsessed that you think that you can give a policy statement on nuclear deterrence as I think. Do you know it's not I think? Nobody cares what Imran Khan thinks. But people do care a great deal as to what the Pakistan government's policy on nuclear deterrence is. And you think this is something to be played frivolously with? Mr. Chairman, I want to take the next few minutes to basically go over some of the grotesque wrongs that have happened in the last few years. Mr. Chairman, shall we start with a statement of the Honorable Foreign Minister, who finds it so difficult to call OBL what he is? मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों में ये शायद है, this issue of उसको हम मार्टर कहें कि ना कहें, या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते. भाई, अगर अल-कायदा ने पाकिस्तान के सोल्जर्स को मारा, पाकिस्तान के पुलिसमैन को हलाक किया, शहीद किया, पाकिस्तान के बच्चों को मारा अल-कायदा ने, अल-कायदा का जो लीडर है उसको आप शहीद कहेंगे या पाकिस्तान के जवानों को शहीद कहेंगे? You have a choice to make. और आप शहजाद खानजादा के प्रोग्राम में कह रहे हैं, शाहजेब खानजादा, कि मुझसे मत खिलवाएं ये. First of all, this is not a drama society. You know, please let the weight of being the Foreign Minister and Prime Minister of Pakistan be felt. We saw what happened from the other side in the first 2 days of budget. Clearly, nobody thinks they are representing the state of Pakistan. They all think it was serious, tablon pe chad ke hullarbazi karke, that is, because that's Murad Khan. No, that's not Murad Khan. That is a minister who is a cabinet member who is representing the state of Pakistan. Mr. Chairman, फिर आप इनकी ये वाली जो issue है about what is currently happening in Afghanistan. How many times has this house been taken into confidence? हम Foreign Relations Committee में बैठते हैं और हमने 10वीं दफा जी, I'm just going to talk about these two. हमने 10 दफा कहा है कि फॉरेन रिलेशन कमेटी में एटलीस्ट आप हमें ब्रीफ कर दें कि अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है. कल लाहौर में धमाका हुआ. आपने शायद ये खबर भी देखी होगी कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ने अपने शैडो गवर्नर्स दोबारा अपॉइंट कर दिए हैं. आपने शायद ये खबर भी देखी होगी कि अफगानिस्तान में तालिबान ने ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर कंट्रोल में ले लिया है. आपने शायद ये खबर भी देखी होगी कि तकरीबन सारे नॉर्दर्न प्रोविंसेस के बॉर्डर्स पे अफगान तालिबान टेक ओवर पहुंच चुके हैं और कई सेटी सेंटर्स के करीब भी पहुंच गए और कई जगह टेक ओवर कर दें. द असेसमेंट इज एटलीस्ट 50% ऑफ द एरिया इज विद इन देयर कंट्रोल. आपने शायद ये खबर भी देखी होगी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कि कल ही के दिन द यूएस इंटेल कम्युनिटी हैज रीअसेस्ड देयर असेसमेंट of having said that it will take 2 years for the breakdown of the Kabul government and for the Taliban to take over, and said now that they agree with the defense, with the Pentagon's assessment, which is for 3 to 6 months, or maximum 6 to 9 months. Now, should that not raise alarm bells for a country which shares a 2,600 kilometer border with that country?
should then not raise alarm bells for a country which has seen the spillover from Afghanistan come through the border into Pakistan and killed our children. Should we forget APS, Mr. Chairman? Should we have this short-term memory amnesia and happily forget everything that happened in this country and refuse to learn? Please wind up, please. Mr. Chairman, I'm sorry, but on this floor, why am I digressing a little bit from the budget? Simply because we never get a chance to talk about foreign policy or what is happening around and the security situation of this country. And फिर हम कहते हैं ये ऐवान की बालादस्ती, ये इस नोशन को तो खत्म कर दें. ये बजट आपने बनाया है. I mean honestly speaking, ये उन लोगों ने बनाया जो 2002 में भी सेक्रेटरी थे, आज भी सेक्रेटरी हैं. ये बजट आप अप्रूव कर रहे हैं. मैं यहाँ पे मिस्टर चेयरमैन, ये तो मेरा आपसे सवाल होना चाहिए ना, या स्पीकर साहब से. मैं जब यहाँ पे 2 दिन के वो मैं उसको दहशतगर्दी शायद कह सकती हूँ के बाद आई, तो मैंने देखा मेरी सीट पे कोई भी मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और कोई भी वो जो हमारी किताबें होती हैं जिनको हम जैसे लोग शायद कभी कभी देख लेते हैं. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं. उन्होंने कहा ऑर्डर नहीं है. बजट की किताबें, जो बजट आपने पास करना है, वो आपको पढ़ने की, देखने की या हमें आपकी सीट पे रखने की इजाजत नहीं है. अगर आपको इजाजत चाहिए वो बजट डॉक्यूमेंट जो आपने अप्रूव करना है यहाँ पे पढ़ने की, तो आप सेक्रेटरी साहब से पूछें, क्योंकि वो those are used as tools for what I would consider again terrorism. Mr. Chairman, I want to talk about this one statement that the Prime Minister has made on the nuclear deterrence. And I want to say, okay, Prime Minister, and I want to read you out, and this I will end so you can be a bit patient. I will just end. I want to, okay. So I want to, I can't read it out right now, but I want to perhaps, जो उन्होंने, हाँ, just give me 1 second. जो इमरान खान साहब ने उस पे कहा है, वो पढ़ने से ताल्लुक इसलिए रखता है बिकॉज जिसको फॉरेन पॉलिसी की ABC भी पता हो या ये पता हो कि क्या इम्पैक्ट होता है आपके वर्ड्स कहे हुए. I want to read this because this in many ways to me shows how the Prime Minister is untutored. And I also want to say, I stand behind every word that was written in the Washington Post article, apparently written by the Prime Minister. You know why? Because it was not written by the Prime Minister. It was a very sane voice. It was a very clear direction. And that is why the Prime Minister requires tutoring. Because what you say, you also insinuate in foreign policy. Okay, so Imran Khan, doesn't matter. You don't count. The Prime Minister of Pakistan is who counts. So the Imran Khan says in this interview, I am completely against nuclear arms. Because obviously I want to be the nice boy. I am completely against. We are all against nuclear arms. हम में से कौन है जो nuclear arms के खिलाफ नहीं है? I always have been. We've had 3 wars against India, and ever since we've had a nuclear deterrent, we have had no war between the 2 countries. We have border skirmishes and we've never faced war. Now, as Prime Minister of a country who sat through India's jets coming into Pakistan's territory, he might have mentioned that despite nuclear deterrence, Prime Minister Modi's India sent jets into Pakistan's settled area, Pakistan's territory. However, he goes on to say, the moment there's a settlement in Kashmir, I believe the 2 neighbors will live as civilized people. We will not need to have this nuclear deterrence. Mr. Chairman, if you give me just 1.5 minutes, I want to explain this whole concept of nuclear deterrence for the Prime Minister to say we will not need to have nuclear deterrence. Now, do we want a nuclear-free South Asia? 100%. The state of Pakistan wants a nuclear-free South Asia. But with a nuclearized Modi India, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमें फलसफे और भाषण RSS के ऊपर, उनके हिंदुत्व के ऊपर देते आए हैं, with a Hindutva oriented Modi government which crossed Pakistan's territorial borders to send its jets for an adventure that will get him his election, with that type of a government, can the Prime Minister of Pakistan refer to or allude to a nuclear Pakistan unilaterally giving it up? There's a difference. अगर आपने न्यूक्लियर फ्री साउथ एशिया करना है, आप नेगोशिएट करते हैं, आप कहते हैं हम ये स्टेटमेंट देंगे, आप वो स्टेटमेंट देंगे. मिस्टर चेयरमैन, आई एम कंप्लीटली वाइंडिंग अप. आई जस्ट वांट टू से कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भूल गया है एक फेमस स्टेटमेंट जिसमें कहा था, वी विल ईट ग्रास बट वी विल गेट आवर प्रोटेक्शन. राइट? इस कौम ने ईट ग्रास किया है, मिस्टर चेयरमैन. थैंक यू जी, वाइंड अप करें. The Prime Minister of Pakistan has no right to represent
those things which he knows little about, and certainly not the sacrifices of the people of Pakistan, of the soldiers of Pakistan, and people who have actually eaten grass to get the protection that he is gloating over, but will never have the ability to earn it. Thank you. Ji, Dr. Ramesh Kumar.